Hi everyone. Thank you so much. Welcome to knowledge session. Feed CA Kashish Grover. So I'll just briefly introduce Kashish, and then we can take this conversation forward. So Kashish is the COO at LegalPay, which is a data-driven and tech-enabled alternative investments platform specializing in legal and debt financing assets. At education front, Kashish is also a CA and a CS and pursuing CFA. His work experience extends across diverse fields like investment banking, deal advisory, etc., at PwC, Goldman Sachs, and etc. So, looking forward to having a fruitful discussion with you, Kashish. So, yeah. So, coming over to knowing you, Kashish. So, could you please share something more than your introduction that I have shared briefly about your CA journey and why did you take up this course in the first place? See, CA मुझे क्यों करनी थी मुझे भी नहीं पता था। मुझे बस 7 से पता था सीए करनी है और करनी थी तो कर ली। जब तक समझ आया कि भाई और क्या कर सकता हूँ या कैसे करना है, तब तक आधी सीए तो हो चुकी थी। फिर सोचा है जो स्टार्ट किया वो खत्म भी कर लेते हैं, तो खत्म भी कर ली। बट एवरीथिंग इन माय लाइफ आई थिंक वो बाय चांस ही हुआ है। मैंने प्लान बहुत करता हूँ बट वो आज तक टचवुड बाय प्लान कुछ गया नहीं है, और वो अच्छा भी है कि बाय प्लान कुछ जा नहीं रहा है। तो आई थिंक फॉर मी सीए वाज पोस्ट फैक्टो। आई वाज इंस्पायर्ड माय ग्रैंडफादर, उनको था कि मैं सीए करूं। तो सिंस 7th मुझे पता था कि शायद उससे ही पहले पता होगा, बट मुझे सिंस 7th पता था मुझे सीए करनी है तो करनी थी। तो ऐसा कुछ वो नहीं था। पोस्ट सीए आई थिंक द जर्नी हैपेंड, मतलब जैसे हमारे कैंपस प्लेसमेंट्स होते थे तो कैंपस प्लेसमेंट से पहले गोल्डमैन का भी एक वो होता था। मतलब अब तो आई एम नॉट श्योर वो करते नहीं करते, बट पहले इन ऑल मेट्रोज दे यूज्ड टू हैव दीज सेशंस और ग्रुप वेयर दे would invite and ask different departments to pitch and then hire directly for the fresh CAs. So I think ऐसे 200-300 odd people का after the screening etc event होता था, और उसमें से they would select 10-20-15 odd people for the further rounds and then select amongst them. So I think I was lucky to be part of Goldman fraternity. I think one of the best working environments, one of the best MNCs one can ask for, because there are two things. One, obviously the side to it that you are working for one of the largest brands across the world. But second and the most important thing is, itna scale hone ke baad bhi they have a very flat culture. They have a culture of where as an analyst I could question a VP if something that I thought and I was leading isn't right or something. That culture I think is missing across the organizations in India specifically, because यहाँ पे वो it's a leveled playing field, whereas people or the organization says Goldman, I think they have built a very open culture because it's embedded into how the functioning happens. So was working around 2 odd years with Goldman Sachs. बीच में मेरा एक छोटा startup भी था. I was doing that in the F&B space, and then I moved to PwC. I was working 3 years with PwC deal advisory. Was fortunate to be working with the best team. Again, कुछ भी plan नहीं था ऐसा. Then I moved to an investment bank back to Bangalore. उसमें भी I think more so from the idea of interacting, because see, transition बहुत different था from MNC to consulting to an investment bank where you are directly working with the early stage series A series B founders. Then you realize के भाई was able to compare कि भाई MNCs कैसे बने, consulting कैसे बना, consulting अपना क्या करता है, MNCs क्या करते हैं, founder को क्या चाहिए. And then I think transition happened when I left the investment bank and I was looking forward to doing something of my own. And then I met Kundan. Kundan was already working in a legal tech for over 4 years then. Then we thought maybe have something on that level. So I was the first person to be on board with LegalPay, and I think over the last 1.5-2 odd years, it has been a fantastic journey until now. That's wonderful to know, and it's I think your humility that you're giving the credit to luck and all, but I'm sure the right amount of hard work would have been there throughout your journey.
So See, हार्ड yeah. वर्क वाज ऑलवेज देयर. मैंने आपको पहले ही बोला, मेरे को सबसे अच्छी चीज सीए में ही लगती है कि वो 5 साल में आपको सब दिखाए देंगे, उसके बाद फिर लगता ही नहीं कुछ भी. Right. I think that's the best thing about our course. And second best thing is that obviously you have a hawk eye to everything. Attention to detail बहुत बढ़ जाता है. You always analyze everything critically. So थोड़ा मतलब if I see कि वो criticality and data driven चीजें वो तो embed हो जाती हैं, तो वो तो फिर सब में ही हो जाती हैं. वो तो फिर I think सभी में हो जाती हैं, आप में भी होगी. Right. So the point that you're sharing about eye for detail is something that consulting also teaches you when Yeah. you're, reviewing or making presentations and you are analyzing things from that critical point of view. So I Yeah. think that really shapes us. So for that matter, in addition to CA, like you've done CS also, and you're currently, I think, CFA level 3 candidate. Yeah. So when did you plan to pursue these, or also these were also, by luck, you did not plan accordingly? हाँ, मतलब वही जैसे सब सीए कर रहे थे, तो जैसे बहुत सारे करते रहते हैं सीए के साथ, तो सीएस भी स्टार्ट कर दी कि यार बाकी सब कर रहे थे, मैंने भी कर ली. कुछ कुछ छोड़ भी दी, बट आई वाज लाइक कि भाई शुरू करो तो खत्म करेंगे. तो फिर सब सीएफए कर रहे थे, तो सीएफए भी स्टार्ट कर ली. वो खत्म करने का टाइम मिला नहीं, बट आई थिंक मेरे साथ सो सो स्टार्टिंग से ही ना, आई वाज नॉट वेरी वेरी प्रोएक्टिव. आई वुड से Okay. प्रोएक्टिव टू लर्निंग. एंड आई ऑलवेज फेल्ट वेरी बैड जब कोई बंदा कोई और इनसाइट लाता है ना. आई वाज लाइक यार ये मुझे क्यों नहीं पता होता. तो मेरे लिए बहुत सारी चीजें ना फोर्स्ड लर्निंग थी. व्हेन यू गेट इनटू अ कोर्स और यू गेट इनटू समथिंग ना, सो इट्स अ फोर्स्ड मोटिवेशन फॉर यू दैट आप जाके उसमें कुछ ना कुछ करोगे ऑब्वियसली, बिकॉज एक बार आपने फोर्स कर दिया अपने आप को, देन यू विल हैव टू परफॉर्म. बिकॉज एक थिंग व्हिच मैटर्स द मोस्ट टू पीपल इज अ फियर ऑफ नॉट एबल टू अचीव द थिंग. वो मेरे अंदर बहुत सारा है, तो ऐसा मुझे लगता है. तो आई ऑलवेज थिंक whenever मेरे को कभी भी कुछ ऐसा लगता है, I always take up as a challenge, and then बाकी सब तो मैंने आपको बोला ही है. It's all driven by uh, I would say consistent luck. Okay. So, but then now that you've done it, so what's the curriculum, how does it feel to do it, or how is it during the journey and post it? So, any suggestion, any critical parameters that one should keep in mind before deciding whether to pursue any other course or not? See, I would say it's driven by individual's own personality. So, for example, I mean, if talking only directly about the CA community, etc., I was very good at law. नंबर कभी नहीं है, वो बात अलग है, बट आई वाज वेरी गुड एट लॉ. मुझे अच्छा बहुत लगता था. सो आई वाज वेरी गुड एट लॉ, इसलिए मुझे लगा कि यार सीएस तो मतलब इजी केक वॉक होगा. और वो सीएस भी बाय मतलब मैंने जब स्टार्टिंग में सीएस स्टार्ट किया था, उसके बाद ही सीएस भी स्टार्ट कर दिया था. मेरी ऑल इंडिया 18th रैंक आ गई थी. फिर आई वाज लाइक कि भाई ये तो बहुत इजी है, ये तो नहीं है. बट फिर उसके बाद पता चला बाद में जाके कि वो सीएस ने भी मतलब तो वो लीगल साइड है, बट वो सिर्फ लॉ की वजह से आप इंस्टिगेट होके सीएस मत करो, बिकॉज सीएस मैमथ ऑल टुगेदर. वो उसमें भी वो पूरी चीजों में घुस जाएंगे. सेबी आ जाएगा, रेगुलेशंस आ जाएंगे, कंपनीज एक्ट तो है ही, बिकॉज इट्स सीएस. सो द आइडिया अगेन शुड बी हैव अ चॉक्ड आउट डिसीजन. इन हाइंडसाइट आई वुड से अच्छा वो मैंने कर लिया, बिकॉज अभी आई अंडरस्टैंड मच मोर देन अगर नहीं करा होता सीएस तो. But I think that should not be the only criteria for anyone to decide. It should always be driven by a person's individual sustainability or individual's efforts. So as to matter, say for example, if you're actually passionate about studying, so if hindsight में again देखो, अगर I was actually passionate about doing law, I should have pursued an LLB, right? So hindsight में आपको कुछ नहीं पता होता. I think it's one piece to be consistent about your efforts. Second, luck तो मैं हमेशा बोलता ही हूँ कि it's driven by प्योर लक. थर्ड, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बाकी दोनों चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते. थर्ड चीज व्हाट यू कैन कंट्रोल इज कंसिस्टेंट एफर्ट. इफ यू आर एक्चुअली गिविंग योर 100% ईच डे, you will understand it consistently, it will mature to something. So that's something that I always tell to my younger brothers, sisters, etc., that always never fail in putting your best foot forward. I might not be the smartest in the room, but I'll always be the hardest. So I'll be the most hardworking guy you will ever feel or come across. Wonderful. So I think वो भी CNA बना दिया, as you said earlier also.
Sir, And from now on, as you've been, guiding your younger cousins and all, you can now continue to guide young entrepreneurs also from this moment on. If you anytime. allow, we'll share your email ID with our community members, and they can reach out to you for any queries whatsoever. Yep. So coming to your work experience with the likes of PwC, Goldman, and all of that. So how did those experiences shape you, towards becoming a better professional, and how did they shape your career altogether? If you could, share that in detail. See, I would say each of my 3 or 4 different roles were in entirety very different and contrasting. Say, for example, when I was working with Goldman, it was a pure culture of professionalism, yet an open culture, where you would see, as an analyst, if I'm owing or doing something, I understood the. I mean, it's not the fact that I haven't made mistakes. I've made a lot of mistakes, but then you have a sense of accountability onto you. When I moved from, and obviously, needless to say, late working hours, etc. So that's by far factor of the product ko kabhi laga bhi nahi. Second, when I moved from Goldman to PwC, the journey again was very different in the fashion. Then moved from a pure MNC culture to a striking culture where client was everything. एंड अगर वो डेडलाइन है, क्लाइंट ने अगर रात को हमें कुछ दिया है, रात को 10 बजे उसके वहीं से आए, सुबह 10 बजे वापस जाना है, तो आपको पूरी रात काम करना है तो करना है. देयर इज नो सेकंड थॉट्स अबाउट इट. आई नेवर कंप्लेन अबाउट दैट आल्सो बिकॉज it's past part and part of the life, and obviously the more you feel passionate about the thing that you are doing, एक point के बाद you start feeling a sense of accomplishment by delivering something or living up to the standards or even exceeding them. And the third move from PwC to InteQuant was more from an early stage startup founders, Series A to Series C seed stage, who was daily interacting with a couple of founders, understanding their thought process, how they are solving each and every problem, और सबका एक ही solution होता था at the end of the day, tech. कुछ भी करना है, we'll solve it through tech. जहां पे भी autonomy दिखे, monotonous दिखे. I have come across brilliant founders. I have come across people who I thought कि यार ये तो मैं भी कर सकता था, etc etc. बहुत सारी चीजें, but सबके पीछे एक ही लगा जो उन्होंने कर दिया. One, they had their sane sense of mind. They had technology in everything that they do. And third, they were very clear what they want to achieve. So वो तीन चीजें I thought was consistent across people. तो वो बहुत ही different experience था. Then move to legal पे obviously. Then you suddenly move from a role जहाँ आप सब कुछ कर रहे थे to role जहाँ आप सब कुछ operate कर रहे हो and you are the sole. मतलब कुछ अच्छा हुआ तो obviously the team is there to take. I would say it's a team's effort. But कुछ गलत हुआ तो आपके ऊपर ही है. So all 4 roles were very different in their entire stack, but I think one thing that was consistent across 4 different roles, I was very open to exploring things and amending it according to the need of the hour. So I was not shy of doing anything. So for example, when in the early LegalPay days, when I was the first person along with Kundan to be on board. So उस point पे मतलब हमारे पास team भी नहीं थी technically. Now we have a roughly around 36-40 member team. प्लस इंटर्न्स वगैरह करके तो 45-50 और लोग हो जाते हैं. बट उस टाइम पे अगर इनिशियल 1000 कंज्यूमर्स के लिए आई वाज द टच पॉइंट जो हर एक जा जाके कॉल करे. शर्म नहीं आई कभी, बिकॉज कभी लगा ही नहीं कि यू आर डूइंग इट फॉर समवन एल्स. ऑलवेज थॉट कि यार ये मेरी खुद की लर्निंग है. That thinking is very critical for anyone who's willing to call themselves an entrepreneur or willing to dive into startups. ये जो बात होती है ना, getting your hands dirty is very very important. चाहे तुम्हें पैम्फलेट लेके तुम्हें लोगों के घर पे जाके पैम्फलेट देना पड़े, that is something very very important as a startup say enthusiast. Yep. So but having said that, आपका जो था, you were working with brands, right? So why did you want to take this plunge into an early stage? And as you're sharing, this was an unknown fact that you were amongst the first persons to be there on the board. And why did you take that? And that would have been involved some sort of risk in terms of your salary also, because what you were getting there would be much higher, right? So why were you able to take this plunge, and how was it supported by your family? See,
thankfully my family has always been very supportive, and that's entirely God's grace. कभी उनको ऐसा कुछ नहीं लगा कि मन में सोचते होंगे कि क्या गधा है, क्या कर रहा है, but they were very supportive, and they are still very supportive in all the decisions that I've made and I continue to make. uh, uh, very fair in terms of the risk. अब भाई हाइंडसाइट में जाके देखूं तो मुझे नहीं पता कि मैंने एकदम से इतने ड्रास्टिक डिसीजन के लिए, बट आई थिंक some sense was driven by the fact that day in and day out I was interacting with founders, so I was realizing कि भाई ये कोई rocket science नहीं है जो वो कर रहे हैं. तो वो लगा. सेकंड, मुझे बहुत ज्यादा ये लगा कि यार मॉडल्स मुझे सबसे ज्यादा समझ आते हैं, फाइनेंशियल्स मुझे समझ आते हैं. ठीक है, सेल्स मार्केटिंग नहीं आता, सीख लेंगे, बट टेक भी तो सबको नहीं आता. तो सबके अपने प्लसेस एंड माइनसेस होते हैं, बट जो मेरे पॉइंट्स हैं, व्हाई कांट आई ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट विद दैट. एंड द लास्ट पॉइंट दैट आई ऑलवेज अलूड टू ना कि ना स्टार्टिंग में ना सैलरी अब मत ही देखो. मतलब फॉर दैट मैटर व्हेन आई स्विच फ्रॉम गोल्डमैन टू पीडब्ल्यूसी ना, बहुत लोगों को पता नहीं है, वहां पे मैं पे कट पे गया था. सो मुझे हमेशा लगा कि बिकॉज गोल्डमैन इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड, तो बट मुझे था कि यार मेरा जब मन नहीं लगता ना, तो फिर आई वाज लाइक कि भाई आई डोंट वांट टू रिग्रेट 10 years या 5 years डाउन द लाइन कि आई विश ये कर लेता. तो वो मेरे अंदर बहुत है. मुझे लगता है यार नहीं भी होगा तो चलेंगे, कम कमा लेंगे, खुश जरूर रहूंगा. तो वो वाली लाइन तो मैं एक्चुअली बिलीव करता हूँ कि यार मनी तो पोस्ट फैक्टो है, और फैमिली में हमेशा यही सपोर्ट करते हैं कि भाई पैसे वैसे कोई मत सोचो. मतलब ठीक है, जितना रहेगा एक्सपेंसेस कम कर लेना, बट डोंट मिस आउट ऑन एक्सपीरियंसेस, बिकॉज दीज एक्सपीरियंसेस विल ड्राइव द वे यू सी द वर्ल्ड. सो ठीक है यार, मतलब मतलब Awesome आई learning. my peers they have been मेरे से ज्यादा पे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बिकॉज आई फील कि यार आई हैव मेड द मोस्ट ऑफ द लास्ट 10 odd years of my life. Awesome learning, I must say, like genuinely. So now let's come to legal pay. So when we were approaching you and when we were reading about legal pay, I found it very interesting. Went through your entire website. बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, to be honest, but would want to know from you that what exactly do you do at Legal Pay, and as a COO, how does your day look like? What time do you start working? What time do you end your day, or do you even end your day? So People who work, what is Legal Pay all about? see the people who work with me ना, वो यही बोलते हैं कि यार एंड मेरी फैमिली भी ये बोलती है कभी तो ऑफ हो जाएगा करो. आई वाज लाइक कि एक बार सब स्टेबल हो जाएगा, देन वो पता नहीं स्टेबल वो कब होगा, बट आई थिंक देयर इज नो स्टार्ट और एंड टू इट. वो 24/7 कुछ ना कुछ चलता ही रहता है. द गुड थिंग इज दैट आई हैव fortunate to have the best team, जिसको एक एक को स्क्रीन करके, the people that who I can trust, the people who are with you through the skin and thin of it. I think they are very hard to find, and I think we at LegalPay are blessed to have such folks. जो हम ऐसा नहीं कहते कि हम यार आप सारा दिन करते रहो, बट ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं वो वॉलेंट्री थिंक यार ये तो होना चाहिए, और ये तो करना ही चाहिए, और ये तो इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए. वो आई थिंक वो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और एज अ स्टार्टअप ना, आप किसी को वो करके दिखाओ ना, तो फिर सब मतलब सबको लगता है कि भाई दिस पर्सन इज रिलायबल. अकाउंटेबल सब हो जाते हैं, बट इफ यू आर रिलायबल एंड कंसिस्टेंट डिलीवरेबल, जो आप मीट करते जा रहे हो, एक्सीड करते हो एक्सपेक्टेशन, once you have shown that consistency and reliability ना, people trust you a lot. और एक बार वो ट्रस्ट बिल्ड हो गया ना, आई थिंक देन आप कुछ भी कर सकते हो. आप नए नए रोल्स कर सकते हो, आप हर जगह में ट्राई कर सकते हो. आई थिंक वही मेरे साथ भी आई मीन द टीम दैट वी हैव, एटलीस्ट जो द पीपल हु हैव बीन विद अस फॉर लास्ट 1.5 years, आई थिंक उनके साथ भी बहुत अमेजिंग चीज है दैट दे अंडरस्टैंड इट. दे वर विद अस फ्रॉम डे वन, और आई थिंक उनमें से अभी तक कोई छोड़ के भी नहीं गया. तो आई थिंक वो अच्छी चीज है, दैट प्रूव्स कि यार अर्ली स्टेज स्टार्टअप आई थिंक सबसे बिगेस्ट चैलेंज पीपल रिटेंशन ही होता है. आई थिंक वो हमारा अमेजिंग रहा है अभी तक. कुछ भी रिटेंशन एक्चुअल में नहीं हुआ है. In fact, people have grown tremendously. Now coming to day start end, तो जैसा कुछ नहीं होता है, और सीईओ में मतलब आपको सब कुछ करना पड़ता है. मैं सीईओ नहीं था, मैं तब भी सब कुछ ही करता था. और सी आइडिया इज कि it's very related to what all I have studied, तो वो I can relate to everything. और different product developments भी तभी हो पाता है because I understand
at least 99% of what lawyers do. तो वो सेंस तो आई थिंक इम्पोर्टेंट ही है. अब बाकी कुछ स्पेसिफिक है तो मैं बता देता हूँ. लीगल पे के बारे में आपको बता देता हूँ. हम वी ऑलवेज थॉट कि यार ये मतलब if you see the pyramid of people that are in India, 1.4 billion M, but आप 1.4 billion में से देखोगे ना, 90% are the ones जिनकी हाउस होल्ड इनकम 25,000 से भी कम है. आप क्या स्टार्टअप बनाओगे जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है? आप D2C में कुछ बेच लो, वो सबके सब एवरीवन इज टारगेटिंग टॉप 1.4, टॉप 10 करोड़, 5 करोड़ पीपल, सब उसी को टारगेट कर रहे हैं. आप जितने लेंडिंग बिजनेस बना लो, वो सब टॉप 4-5 करोड़ गुड बिजनेसेस, गुड एंटरप्रेन्योर, सब उसी को टारगेट कर रहे हैं. Everyone is building for the people who don't need stuff or who have the money or the disposable income, who is looking or solving at the balance, actually need who actually need your product or services or the innovation to make world an actually a better place. Because ultimately you're not making the world a better place, it's still the same, you're just bringing your different product. मतलब से फॉर एग्जांपल अगर आप मेंस ग्रूमिंग ब्रांड लाए हो, तो वो ऐसा नहीं था कि वो नीड कोई और फुलफिल नहीं कर रहा था. HUL, PNG सब वो नीड फुलफिल कर रहे थे. आप एक और चीज ले जो वो नीड फुलफिल कर रही है. नॉट एक्चुअली. तो वी ऑलवेज थॉट कि वांट टू मेक समथिंग व्हिच सॉल्व्स द नीड ऑफ द actual need. So impact is something that I and that's something that I so it's a very funny story. I was one of the leading VCs के partner थे. उनको I was showing a deal जिसमें एक amazing business था, एस्ट्रोलॉजी का. अमेजिंग प्रॉफिट्स बना रहा था, सुपर, मतलब मार्जिन देख लो कि अमेजिंग था. चाहो तो मतलब अभी वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रांड्स है. तो आई वाज शोइंग हिम दैट डील. तो उन्होंने मुझे बोला कि यार ये डील तो बहुत अच्छी है, मार्जिन बहुत अच्छा बना रहे हैं, मतलब 60% EBITDA था यार, मतलब सब कुछ काट करने के बाद. एंड उस टाइम पे मंथली मतलब ARR अप्रोक्सीमेटली 100 CR टच कर जाता. तो इतना स्टेबल बिजनेस, सब कुछ सही कर रहे हो. बट द पॉइंट इज, उन्होंने ये लाइन बोली, एंड दैट लाइन पता नहीं कैसे स्टक टू माय माइंड, कि I would never invest in something, because they have been a very strong investors across the Indian VC ecosystem, that I won't invest in something which I can't relate to. Because I will invest in something, I will stick to it for the next 5, 7 or 8 years of my life. And I don't want to invest in something which I don't relate to and which I don't see that there's a material impact affecting it or helping people with something which adds to a consistent value in their lives. So वो line I think मुझे पता नहीं क्यों याद है, but वो मुझे लगा कि यार बात तो सही बोली है, मतलब कि do something या जिससे it adds value to your life and सामने वाले की भी. तो फिर बस ऐसे करके हमें लगा कि कुछ ऐसा बनाते हैं which solves the problem. तो legal pay solves a problem of legal and insolvency to the people. Obviously उनके लिए भी करते हैं जो who can afford, but उनके लिए भी who can't afford. Say for example, आपको तब पैसे कौन देता है? When you actually need it. When a company moves under insolvency, हम उनको तब financing देते हैं. When people have cases or litigations against mammoths, one of the finest startups के against we have funded, one of the largest Indian listed players के against we have funded disputes. So disputes is one thing which is inevitable for any business or a person की life, but उस टाइम पे आपको पैसे जरूर चाहिए होते हैं, उस टाइम पे आपको कोई पैसे नहीं देता. The only way of funding it by equity or debt. तो हमें लगा कि we build a fintech in legal and insolvency market. तो वहां से सब कुछ स्टार्ट हुआ. I think अभी जो दो प्रोडक्ट that we work on, one is litigation financing, B2B commercial disputes होते हैं, तो we fund one side of, especially claimant side fund करते हैं. से फॉर एग्जांपल आपने विशाल को कोई सर्विस दी और विशाल ने आपको पैसे नहीं दिए, तो पैसे नहीं दिए आपके पास क्या होगा? जाके 50-50 पे सेटल कर लोगे, 40-30 पे कर लोगे, बट टेक्निकली इट वाज योर राइट. सो हम बिजनेस को कहते हैं कि यू डू व्हाट यू आर बेस्ट एट, लीव द रेस्ट ऑन टू अस. सो वी फाइनेंस द एंटायर कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन फॉर यू. सारे इंसिडेंटल चार्जेस जो कोर्ट फीस देने, बिकॉज इन इंडिया जस्टिस इज नॉट फ्री, नॉट इन इंडिया, नॉट एनीवेयर इन द वर्ल्ड. तो हर चीज के पैसे लगते हैं. कोर्ट फीस लगती है, स्पेशल फीस लगती है, आर्बिट्रेटर की फीस लगती है, एग्जीक्यूशन फीस लगती है, स्टैम्प ड्यूटी लगती है, लीगल काउंसिल की फीस तो लगती है, सीनियर एडवोकेट लोग उनकी फीस लगती है. तो सारे कॉस्ट हम बेयर करते हैं. ऑन इन रिटर्न वी लिंक देयर पेमेंट टू द सक्सेसफुल रिकवरी. एंड थर्ड दैट वी प्रोवाइड इज अ हेजिंग बेनिफिट. इट्स अ नॉन रिकोर्स. इफ यू डोंट विन, वी डोंट चार्ज यू एनीथिंग.
तो ये 3 बेनिफिट होते हैं इन लिटिगेशन फाइनेंसिंग. ग्लोबली इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट. दे आर लिस्टेड प्लेयर्स अक्रॉस द ग्लोब who do this. Even VCPE फंडिंग से भी ज्यादा बड़ी मार्केट है. $14 billion of assets है, which litigation funders hold globally as of date, and the potential market is approximately 500 odd billion. So जब इतनी strong market globally है, तो I think the next in turn is India. तब से वेट ही कर रहे हैं इंडिया to become a litigation financing hub. So just to, I think, understand in a nutshell. So, for example, if any XYZ company, Yep. any say creditor, corporate debtor has taken them to IBC in वो चीज़ है. court. तो एक होता है B2B कमर्शियल डिस्प्यूट्स. आप हाँ. दोनों बिजनेस थे, आप दोनों कर रहे थे, दोनों सही बिजनेस हो, कोई भी इंसॉल्वेंसी में नहीं है. दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, रिकवरी जैसे मैंने आपको बताया, दैट्स वन पीस ऑफ डिस्प्यूट. और भी कोई कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट हो सकता है, इंडिविजुअल्स फाउंडर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं. बहुत सारे ऐसे लिटिगेशंस होते हैं जिसमें कमर्शियल वैल्यूज इन्वॉल्व. तो वो नॉर्मल बिजनेस के लिए भी करते हैं, उसको हम लिटिगेशन फाइनेंसिंग बोलते हैं. Second product is interim financing, which is provided under insolvency. When a company moves under insolvency, we provide through our NBFC channel partners lending to run the show. मेरे पास assets हैं, land and building, but these are illiquid in nature. But कंपनी इंसॉल्वेंसी में क्यों ही गई? क्योंकि पैसे चाहिए पूरा प्रोसेस रन करने के लिए. वो पैसे तो पहले भी नहीं थे. तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए, बट आई हैव एसेट्स, आई हैव लैंड एंड बिल्डिंग. उस टाइम पे सीओसी में कौन बैठा है? बैंक बैठा है, पब्लिक सेक्टर बैंक बैठे हैं, एनबीएफसी बैठे हैं. अब पब्लिक सेक्टर बैंक का वो बंदा है, वो अब गलती उनकी भी नहीं है. अब वहां पे वो उनका चीफ मैनेजर, सीनियर ऑफिसर वगैरह कोई बंदा बैठा है. वो अगर आपने किसी दूसरे बैंक को के लोन में डिफॉल्ट कर दिया और आप एनपी हो गए, वो आपको तभी पैसे नहीं देता. इसमें तो आपने उसके खुद के बैंक के अकाउंट में लोन को डिफॉल्ट किया, वो आपको एक रुपया देगा. बट टेक्निकली लॉ प्रोवाइड्स, एंड दैट्स वेयर आई से कि प्रोडक्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट इज टू रीड. और तभी हमें लगा कि यार लॉ तो इसको फर्स्ट राइट देता है. सो इंटरिम फाइनेंसिंग का स्पेशल प्रोविजन अंडर आईबीसी, वेयर दे से कि भाई जो भी बंदा इस टाइम पे पैसे दे रहा है, व्हेन इट्स अंडर सीआरपी, यू विल हैव द फर्स्ट राइट ऑफ रिकवरी. तो बस it's a for those of us who do not know, I'll just tell you that COC is Committee of Creditors, CIRP is Corporate Insolvency Resolution Plan, and so process, correct. So uske chalte when a company goes into IBC, so all that matter is done. So but isme Kashish, jo paisa jab liquidation ke baad jab milta hai, that is enough, that funnel kind of a process. So the equity shareholders waterfall mechanism. So equity shareholders come at the last. But how will your company get your company get the money? हाँ, तो मैंने आपको भी बोला, ये वही चीजें हमने पढ़ी, सब कुछ थी. हमें पता है कि वाटरफॉल मैकेनिज्म है, हमें पता है सब कुछ है, हमें पता है लॉ में प्रोविजन है. तो और कोई क्यों नहीं बना सकता, और क्यों हम ही बना सकता? बिकॉज हमें सब कुछ समझ आता है. तभी मैं बोलता हूँ द फील्ड आई एम इन ना, मुझे बहुत फायदा होता है, क्योंकि मैंने वो जब कुछ करा, बिकॉज आई एम एबल टू रिलेट टू थिंग्स. सो answer it. How do you guys recover the money? So if you have given it to the person who is in the IBC, how will you recover your money, the interim finance that you provided? हाँ, तो रिकवर करने का प्रॉब्लम भी नहीं है, बिकॉज दो स्टेप्स होते हैं. अगर सीआरपी में कोई और उसको खरीद लेता है, तो आईएम के अंदर उतना पहला पैसे देना पड़ता है बिफोर एनीथिंग इज पास्ड ऑन टू सीओसी. तो वो तो उसके ऑर्डर में ही हो गया एनसीएलटी में जो रखोगे. अब प्रॉब्लम है सीआरपी नहीं हुआ, वाटरफॉल मैकेनिज्म किक इन हुआ और वो लिक्विडेशन में आ गया, देन वी आर पार्ट ऑफ द इंसॉल्वेंसी कॉस्ट. और इंसॉल्वेंसी कॉस्ट तो सबसे ऊपर थी. So in any case, you are secured. Yep. Awesome, man. Wonderful. Very, very, very interesting idea, and I think this will go a long way. Our best wishes to you and your team. Thank you. So wonderful, yeah. So would want to know more about your views on the current startup ecosystem as well. So the way businesses, startups are burning cash so heavily, because again जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा burn हो रहा है, the money does not belong to the founders, right? The money belongs to the VCs. So what do you think about such startups? What is your view on their future growth, their future prospects? Are they going to make money? Are they going to stay solvent, or they are going to become your client? See, I would say ना, it's a first you have to understand कि VC क्यों बोलता है कि growth target करो और money lose करो. Because one, they want to capture the market. Second, VC को ना, they don't want to invest in a business जहाँ उनको 15-20% EBITDA मिल जाए और वो sustainable business बना दे.
technically VCs and India, it's a culturally driven thing from the Western, which could be a hidden fact. अब वहां पे ऐसा ही था और the capital is very formal and very structured. In India बहुत fragmented capital है, इसलिए सिर्फ handful of VCs थे, अब तो और बढ़ते जा रहे हैं. बट अगेन VCs के लिए गेम तभी है, वो नहीं चाहते कि आपके जो 10 बिजनेस है उसमें से सब सस्टेनेबल बन के पैसे बनाए. वो 10 में से चाहते हैं एक बने और वो बहुत बड़ा बने. वो इतनी मार्केट कैप्चर कर ले कि जोमैटो टाइप गेम हो जाए उनके और उनको एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स मिल जाए. का गेम वही है कि यार मैं 10 में से वो सिलेक्ट करूंगा जो सबसे अच्छे मेरे को एक्सपोनेंशियल रिटर्न देके जाएगा. इसलिए वो 10 भी वही सिलेक्ट करते हैं जिनमें उनको लगता है कि जब गेम ही उसकी है जो मेरे को एक्सपोनेंशियल रिटर्न देगा, तो उसी में इन्वेस्ट करते हैं ना जो एक्सपोनेंशियल एक्चुअल में देगा रिटर्न. वरना आप बताओ, सीए से अच्छा कोई बिजनेस नहीं लगता मुझे. फुली प्रॉफिटेबल क्यों नहीं कोई वीसी पैसा इन्वेस्ट करता? बिकॉज इट्स सर्विस बेस्ड बिजनेस, पीपल ड्रिवन बिजनेस. आप उसमें टेक जितना भी लो, सर्विस को आपको जस्टिफाई करना पड़ता है, प्रोडक्ट नहीं है. सेकेंड, द थिंग दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड एंटरप्रेन्योरशिप, और मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है कि I always tell this to numerous people, ना, that always focus on your 2 core teams. One is your sales team. Sit with your sales folks who are interacting with your clients day in and day out. Understand what the problem is and refine the product. Because बहुत बार क्या होता है ना, you don't understand what the market says to you, what your client needs, और आप अपने मन में चीजें बनाते जा रहे हो. So very important for you to be agile and tweak your product so that it meets your demand for the consumer. Keep him happy. He'll go to 10 other people and be a best marketer of yours. Second, spend time with your finance guys. One of the very loosely treated folks, I think, हम finance वाले ही होते हैं, because हमें लगता है कि यार बस ये बैलेंस शीट फाइल करके दे देंगे, रिटर्न भर देंगे और कुछ नहीं होता. But what they don't understand ना, P&L never ever lie. तो आपकी P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो से सही ट्रूथ आपको कोई नहीं बताएगा. So when you are actually looking at your P&L numbers, analyze it very carefully. और वो मेरे लिए बाय फैक्टो ही था, बिकॉज मुझे समझ आता है कि भाई बॉटम लाइन कभी लाई नहीं करता, ऊपर का टॉप लाइन भी आपका झूठ कभी नहीं बोलेगा. रेवेन्यू झामरे से लोगे, आपको पता चलेगा कैसे कंसिस्टेंट ग्रोथ हो रही है. आप पिछले 15 महीने का एमआई खोल के देख लो, आपको साफ पता चल जाएगी आपकी क्या परफॉर्मेंस थी. कोई और मेट्रिक्स हो ना हो, रेवेन्यू से अच्छा कोई मेट्रिक्स नहीं. और सेल्स से बड़ी कोई टीम नहीं है आपकी. कीप देम लाइक योर बेस्ट फोक्स इन द कम्युनिटी, बिकॉज अल्टीमेटली स्टार्टअप में आप अपने लिए जो मर्जी कुछ बना लो, अनलेस एंड अनटिल यू आर मेकिंग समथिंग जो आज तक किसी ने ना सोचा, तब तक के लिए सेल्स इज एवरीथिंग. बिकॉज अभी भी आपके टाइम पे जो मर्जी आपने प्रोडक्ट बना लो, कोई ना कोई बंदा उसकी नीड फुलफिल कर ही रहा है कैसे ना कैसे. सो योर फोकस शुड बी टू हैव द बेस्ट पीपल ऑन बोर्ड, लेट देम वर्क, गिव देम ऑटोनॉमी. बट हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि यू नीड टू गिव देम डायरेक्शन, तो गिव देम डायरेक्शन. सो ये दो चीजों में आई थिंक यू शुड बी वेरी अपफ्रंट एंड वेरी कैंडिड. घुमा घुमा के बातें मत करो, एकदम बी वेरी अपफ्रंट विद योर ऑडियंस, विद योर टीम. I think team understands more because ultimately they are the ones who will sit beside you और उन्होंने आपकी जर्नी देखी है. तो I'll always say कि भाई have your team with you, बाकी सब तो everything is secondary. Profitability की जहाँ पे बात आती है ना, देखो अब वही है, it's a mix of decision between a founder and an investor. अब बहुत बार इन्वेस्टर को अपने विजन के साथ क्लियर होना चाहिए और फाउंडर को अपने थीसिस के अकॉर्डिंग क्लियर होना चाहिए. Everything goes on gut feeling. ऐसा बात मत बोलना कि इन्वेस्टर ने बोला तो ऐसा हो गया. Technically you should focus on what you feel कि यार this is the right way to go. Last year 2019 to 2021 were the blessing for the startup community because capital was available on quick. जिसको भी था, जो भी था, स्टार्टअप इन्वेस्टिंग भी बहुत फ्लरिश कर रहा था. अब ऐसा थोड़ी है कि लास्ट 1 साल में स्टार्टअप्स कुछ चेंज हो गया. मतलब अगर पहले भी यार आप खाना मंगवा रहे थे, अभी भी खाना मंगवा रहे हो, इनफैक्ट ज्यादा ही मंगवा रहे होगे लास्ट ईयर से, तो ग्रोथ रुकी थोड़ी है. बट आप एकदम से बोलो फंडिंग विंटर आ गया, ये हो गया, वो हो गया. उन सबसे बस ये है कि रैशनलाइजेशन ऑफ अप्रोच थोड़ा हुआ है. पीपल आर नाउ लुकिंग एट द फैक्ट कि यार सिर्फ एग्जिट से मिलेंगी. बहुत से रीजन थे. मैक्रो इकोनॉमिक क्रैश था, अब लास्ट 20% यूएस मार्केट डाउन आई हुई है, सारे टेक क्रैश हो गए. बहुत सारे फैक्टर्स थे जहां पे उनको लगा कि एग्जिट्स क्या नहीं मिलेंगी. आई थिंक वो एक सेंस ऑफ अर्ली अचीवमेंट था, थोड़ा रैशनलाइज हो रहा है. बट आई थिंक अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के लिए तो अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई थिंक वहां पे कुछ ऐसा फंडिंग विंटर जैसा नहीं है. जब तक टिल द टाइम यू आर एट सीरीज ए, आई थिंक एवरीथिंग इज सेम फॉर यू. बट ठीक है, थोड़ा रैशनलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन हुआ होगा,
जहाँ पे people were all crazy about startup investing, अब थोड़े rationalize हो गए. I was speaking to one of the folks in an early stage syndicates run करते हैं, one of the best in India. He was telling me यार कि पहले 2-2 करोड़ की डील्स होती थी, वो भी 12 घंटे में फिल हो जाती थी. आज 60-70 लाख की डील में भी 2-2 4-4 हफ्ते लग जाते हैं. तो वो स्लो डाउन आया for the people who were looking at this as a pure asset class और ऐसे blindly पैसे डाल रहे थे. But I think rationalization जो true investors थे वो आज भी वैसे ही हैं. इनफैक्ट वो तो ड्राई पाउडर रख के बैठे कि भाई जब स्टील डील्स आएंगी और लेंगे. Makes sense. I think very much answers what I was trying to understand. So I saw that even you have invested in a startup as an angel investor. So what was it like? Where did you get that deal from? And are you still willing to invest? Yeah, kaisa hai? What was the ticket size, if you want to share? मैं छोटे छोटे करता हूँ 2-3 लाख के, मेरे से कुछ ज्यादा वो नहीं होता है. मैंने रफली अराउंड 8 to 10 ऑड स्टार्टअप्स में किया हुआ है. एवरीवन वाज समथिंग व्हिच आई friend etc. I liked the thing etc. वैसे ही सब कुछ है मेरा. I'm not a formal player. So I was believed कि यार एक बार मतलब वो एक मेंटल पुश होता है ना कि जब when you're raising funds, and I think वो I can relate to because मैंने सब स्टेजेस के लिए रेस करवा के देखा है. तो अर्ली स्टेज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, there is no one that who is willing to believe in you. Right. एक बहुत बार चाहिए होता है, एक फर्स्ट बिलीवर चाहिए. आई एम थैंकफुल टू अ पीपल क्योंकि मेरे को ऐसे बहुत बिलीवर्स मिले. कुछ ऐसे भी थे जिनके साथ मैं खुद का जब मैंने करा था आई डिडंट टेक देयर चेक, बट आई थिंक वो सेंस ऑफ बिलीफ और वो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो वो इसलिए वो प्योर उसी से एक से थे कि भाई एटलीस्ट किसी को तो समझ आ रहा है. फिर एक बार किसी को समझ आता है तो फिर तो इंडिया में वही है कि भाई एक बार 10 लोग इकट्ठे हो गए फिर 1000 इकट्ठे हो जाते हैं. Right. तो वो टेकिंग द फर्स्ट प्लंज होता है. मैं नहीं बोलता कि मैंने कुछ उनपे वो करा है, फेवर करा है एक्सेट्रा, बट आई ऑलवेज थॉट कि यार अगर मैं उनकी जगह पे होता तो क्या होता. तो इट्स जस्ट अ सेंस व्हिच आई थिंक यार मनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट इज फेथ इन पीपल एंड होप. तो इट्स तो मैं ऐसा कुछ Did any startup shut in which you had invested funds? नहीं यार, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है. Chalo, बट that's good. That's great. Great. So you're still invested in all those companies where you were. Okay. एग्जिट्स भी नहीं मिले हैं, वो भी है. Okay. And so what do you think is the say future of Indian CAs in the startup ecosystem, which is flourishing? And you must have seen that a lot of people are taking leaving their jobs of positions as high as partners at big fours and coming to startups. What do you think is the future, and what are the most important skills that at an early stage, if someone says qualifying and is a fresher and are thinking to take a plunge and joining as a finance executive in a startup, so what are the most important skills that they should hone? See, I'll say the best thing about CA courses, और ये तो हमें सिखाया भी तब से ही गया कि जितनी वैल्यू मेरे साइन की अगर आई एम प्रैक्टिसिंग तो उतनी वैल्यू एक बिग फोर के पार्टनर के साइन की भी. वो भी बैलेंस शीट को ऑथेंटिकेट कर रहा है, मैं भी साइन करके साइन बैलेंस शीट कर रहा हूँ. सो अल्टीमेटली सिमिलर थिंग हैपेंस विद द स्टार्टअप. अगर वो बिग फोर का पार्टनर अगर रिजाइन होके अपना खुद का खोल रहा है वर्सेस एक फ्रेश सीए अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, आई थिंक सीए वाले के चांसेस मच हायर होंगे, ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल. ऑब्वियसली उस पार्टनर के कनेक्ट्स होंगे, बट द एनर्जी, द zeal or the passion, newer mindset who understands, because the best thing about India is 60-65% of the people are folks young, 28 से कम. अब उनको समझेगा ही वही भाई जो उस लेवल का है, उस 55 वाला पार्टनर नहीं समझ पाएगा. सो टेक्निकली आई थिंक द ऑड्स आर हायर अगर कोई फ्रेश सीए स्टार्ट कर रहा है विद द फुल zeal potential. ऑब्वियसली द बेस्ट वन आई वुड से वुड बी द वन जिसने थोड़ा सा एक्सपीरियंस स्टार्टअप का ले लिया है, 3-4 साल लगा लिए हैं, समझ आ गया कि सब कुछ क्या है, उसके बाद स्टार्ट कर रहा है. तो दैट्स द बेस्ट बेट. बट बिकॉज उसमें यू अंडरस्टैंड बोथ साइड्स ऑफ द सिनेरियो, प्लस यू स्टिल हैव द zeal, द करेज. जैसे आप छोटे बच्चों को देखोगे ना, दे डोंट फील शाय इन जंपिंग. वो कहीं से भी पूछ जाएंगे, उनको पता नहीं है कि रिस्क क्या है.
वो ठोकर खा के सीखते हैं। बट जो एक बंदा गिर गिर के बड़ा हुआ है वो रिस्क लेने से डरेगा। उसको आप बोलोगे ना कि भाई आज के पास आपके पास 10 महीने का रनवे है, ये अमेजिंग मार्केटिंग कैंपेन है, इसमें लगा दो 4 महीने का रनवे, तो वो बंदा सोचेगा भाई उसके बाद 6 महीने का रनवे रह जाएगा, मेरे को रेस करने में टाइम लगेगा। वर्सेस एक यंग एंटरप्रेन्योर होगा, वो उसको एक्चुअल में उसमें मेरिट लगेगा, वो लगा देगा, क्योंकि उससे पहले भी कुछ नहीं था, मैं अभी कुछ नहीं हूँ। बेस्ट थिंग अबाउट सीए फ्रेटर्निटीज के फाइनेंस समझ आता ही है, दूसरा बस सेल समझना है। एक बार यू गेट टू लर्न कि हाउ टू सेल, आई थिंक देन ऑब्वियसली मैं तो सिर्फ ये नहीं देखता कि सीए सिर्फ सीएफओस बनने चाहिए, सीएस इनफैक्ट सीईओज एंड फाउंडर्स बनने चाहिए। Absolutely, absolutely. So, in terms of your knowledge and intellect, I was getting a lot of Ashneer Grover vibes and just realized that you're also, Grover. So, he's also very to the point and very. दूर दूर तक नहीं, नहीं, ठीक है, it's okay. But yeah, so the anything people who from have the. known me, मैं Yeah, स्टार्टिंग से इनसे बात करता हूँ just to okay. discuss. Thank you so much, Kashish. It was such a wonderful conversation and such an insightful one. Thank you so much for coming. Really enjoyed the session.